Good morning, all of you. Welcome you all in this platform. So today we'll discuss the set 3 or part 3 of our discussion, the cover topics with the previous year question paper. As you have seen in the first and second set or first and second part, ame economy discuss karithilu. The first part was in planning and the second part was on the economic growth and development. So today we'll discuss another important topic from prelims, and I think if you see the previous year question paper, semane question pacharuchandi e topic ru, and these topics are poverty, unemployment and human development. Okay, so chalantu discuss kariba. This is the Diwali offer. We have this prelims and mains course achi, and which is covered comprehensively. Apana the OAS dabaku chahunchanti 2023 re, then you should join this and you will have holistic coverage. Pura complete kara jiva prelims and mains re syllabus ku, and this discount offer is limited, so you can join. So this is the topic ame aji discuss kariba: poverty, unemployment and the human development index. Specifically they ask a question in prelims, so dekhiba kibhali bhaବରେ question asichi, and through that we'll cover this topic. This is the first question. Prathama question hochi kono: the most important type of unemployment to be met in India. को प्रकार रो unemployment सबुठारु अधिका इंडिया रे देखा जाए, को प्रकार रो unemployment सबुठारु अधिका इंडिया रे देखा जाए. So before I go to the answer, let me discuss all these 4 types of unemployment. Okay, 4 types of unemployment. The first is the frictional unemployment. Frictional unemployment. What is this frictional unemployment? Frictional unemployment in the sense, sometimes there is a mismatch between the demand and supply of labor force. Example होची कोन, जदि आपण देखिबे गोटे सपोज गोटे प्रोजेक्ट रे 100 जण लोक दरकार, 100 जण लोक दरकार, बट इन दैट प्रोजेक्ट 100 रु अधिका आई मीन 100 रु as per the requirement 100 जण आपण को मिलु नाहंती. Then you can say like country like India, एते बड़ देश, so much of people are there, so much of labor force, but then why there is a mismatch? Sometimes we can see that बेले बेले हमको एभली भाबरे अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाए. काहे कि से मिसमैच हुए ना, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल सेट रो दरकार थाए, required amount of skill set, required amount of knowledge which is fit into that job, that is something very very scarce in nature. Semiti requirement thiba या सेमिति स्किल सेट नॉलेज थिबा अनएम्प्लॉयमेंट इधि पई देखा जाए कि सेबळी भाबरे लेबर फोर्स न थांदी. So that is the reason there is a mismatch between the demand and supply. Okay, तेणु as for the required amount of labor nahanti with that knowledge, with that skill set. But dekhutube, due to immobility of labor, lack of correct and timely information, seasonal nature of work, that is the, I mean, the mane hochi kono na जोठी दरकार थिबो सेठी की सपोज से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लेबर जाई परू नथिबे, कि सीजनल इज अ फैक्टर. सीजनल इन द सेंस हम गोटे एग्जांपल आपन को दउची, जेमति कि जो हार्वेस्टिंग सीजन रे पैडी जो राइस कल्टिवेशन हुए से समय रे बहुत गुड़े लेबर फोर्स अच्छा जोटा कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एमाने कोठी की जानती, हरियाणा एंड पंजाब को जानती. कहीं ना हरियाणा पंजाब रे दे नीड मोर लेबर फोर्स. ओके, दे नीड मोर लेबर फोर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन. तेणु से समय रे बेसिकली कौन करा जाए, आपण एठी लेबर फोर्स आपण को कम मिलिबो, अधिका लेबर फोर्स कोठी आपण देखा जिवो हरियाणा एंड पंजाब रे, ड्यू टू दिस शिफ्ट. कहीं ना दिस इज अ सीजनल फैक्टर. ओके, सेमती आपण इमोबिलिटी कुड बी मेनी रीजन, डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेटा भी गोटे फैक्टर हे पारे, एंड स्किल सेट भी आपण को जोटा कहउथली दैट वाज अनदर फैक्टर. ओके, तो एटा होची फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कोन? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोटे साइकिल रे चली थाए. जेमती हमें कहि परिबा
kind of a business cycle in the sense that this is what this phase is known as the boom. This phase is known as, let's say, this recessionary phase, depressionary phase, and this is the slump, jahaku bottom or what we call the lowest or bottommost position in the economy. ये जो सिचुएशन टाको आमे ड्यूरिंग द कोविड भी कहि परिबो जतले आमे देखिथिले इंडस्ट्रीज वर शट डाउन, पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक टू देयर होम, इंडस्ट्रीज स्टॉप्ड देयर ऑपरेशन और प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स गुडार बहुत दाम बहुत बढ़ी जाइथिला। तेणु से बड़ी भाव रे जेंति इकोनॉमिक क्राइसिस जतले आसे, दिस इज द सिनारियो। इकोनॉमी पीक रे जतले पहुंचे, दिस इज द बूम। आई थिंक दिस इज व्हाट यू कॉल द बिजनेस साइकिल। तेणु ये जो साइकिल रे मूव करि था इकोनॉमी, से साइकिल रे मूवमेंट सहित जितेबाला ये जो फेज रे आसी था डिप्रेशन हो कि रिसेशन हो, जितेबाला स्लम्प को भी आसी था बेले बेले इकोनॉमी, से टाइम रे बहुत लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रो फेज रे जीवाको पड़े, या बहुत लोगों को ले ऑफ जो आमे कहूछु बर्तमान जेमती कॉर्पोरेट ले ऑफ चलछि। काहेकि ना जो कोविड रिलेटेड ग्रोथ, कोविड पूर्व जो ग्रोथ थिला, कोविड पर से ग्रोथ इंडस्ट्री बर्तमान अचीव करि पारि नाही। Still they were struggling with that kind of phase, COVID phase. That is the reason we can say that layoff chalichi या mass unemployment देखा देइछि। तेणु cyclical unemployment होछि कोन, basically ये जो down swing in the business ପାଇଁ you can see those kind of unemployment. Okay, now next, disguised unemployment. Disguised unemployment basically यदि आपण एग्जांपल देखिबे एग्रीकल्चर सेक्टर को आपण नहीं परिबे। एग्रीकल्चर सेक्टर कोन ना डिस्गाइज्ड रो माने होछि कोन ना जेति की आवश्यकता ठारू अधिका एम्प्लॉयमेंट दवा, या आवश्यकता ठारू अधिका लोक गोटे प्रोजेक्ट रे काम करूछंदी, तेबे ऑब्वियसली सपोज गोटे प्रोजेक्ट रे काम परे देयर आर 5 पीपल आर रिक्वायर्ड, इफ मोर देन दैट आर गिवन द एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली से जो एडिशनल लेबर फोर्स अछंदी दे आर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। व्हाट इज दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज व्हाट? द productivity of one additional amount of labor force, one additional labor force which is adding to that total productivity. ता माने होची जदि गोटे 5 जण लेबर मिसिकी जदि गोटे 100 यूनिट र काम करूछंदी, if you add the 6th labor, 7th labor, then their addition to this total productivity is zero. They are not contributing anything because सही यूनिट 100 यूनिट आगरू भी थिला, एबे भी 100 यूनिट प्रोड्यूस होची। So that is, we call it disguised unemployment. If you see in the agriculture sector in India, then agriculture sector is something suffering from this disguised unemployment. काहेंगी ना agriculture जदि आपण देखिबे in India particularly, it's a family business. So almost every members of the family, they involve in that agricultural work. But they do not have such knowledge or idea that their productivity or marginal productivity or their contribution is something zero to the total output, right? So another aspect why there is a disguised unemployment in agriculture sector, because we have this surplus labor force, दरकार ठारू अधिका labor force अछंदी। सेकेंड आस्पेक्ट होची अन्य जगह रे जॉब रो अपॉर्चुनिटी बहुत कम अछि। जेंते आपण सेक्टर्स गुडे आमे डिवाइड करछि कोन, प्राइमरी सेक्टर जोटा कि एग्रीकल्चर रे जाउची, फॉरेस्ट्री जाउची, देन द सेकेंडरी सेक्टर जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर आमे कहूचे, आउट होची टर्शियरी सेक्टर जोटा कि सर्विस सेक्टर। इफ यू सी theory, what theory says? Theory says if there is a surplus in the primary sector or agriculture sector, then that surplus labor force should be absorbed by the secondary or manufacturing sector. So secondary or manufacturing sector should absorb that surplus labor force, but that is not something happening in our country. That is the reason you will find that many such labor force are employed in this primary sector. Although they are getting job, however their output to that total product or total production is something zero. Sethipai you can see that disguised unemployment re you will have this marginal productivity which is equal to zero. Okay, disguised unemployment. Now structural unemployment. Structural unemployment is, suppose there is a structural change in the economy. Structural change ame kon koi periba, jemti suppose 2015 onwards you will find this let's say or before that 2010 11, and then we have seen this digital India. I mean everything has been digitalized.
new technology have been set up, new technology have been developed, and they have been applied in different sectors. तेणु जो न्यू एज टेक्नोलोजी डिजिटल इंडिया बहुत गुड़े पुराना लोक जो मैंने अच्छा द old age people or those people above 50 or 55 years, they are working in the different offices, maybe private sector or the government sector. They are not acquainted with the what you call the new age technology. For example, आपने देखिथिबे रेलवे रे कौन हला डिजिटल इंडिया या धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी एंटर कला, दे स्टार्टेड इंस्टॉलिंग कंप्यूटर्स. So people, they did not know how to operate those computers. So that is the reason few have left the job. Okay, few have left the job, or in private sector there was a layoff kind of thing. So structural unemployment in the sense that already significant structure change as in terms of this what we call economy. Say time रे भी मध्य बहुत गुड़े लोगों को employment मिले नहीं because they are not acquainted with that. They are not what you call the I mean they do not have the adequate skill to cope up such scenario. तेणु से आम कह structural unemployment. So basically जो गोटे country transition रे थाए from the underdeveloped to developing, from developing to developed, so these kind of unemployment you can see or that is visible in the economy. Okay, चलंतु तेणु okay, let me answer this question. So what is the most important type of unemployment आमे यदि देखिबा, then obviously the disguised unemployment. Disguised unemployment काहेकि, let me tell you, यदि आपण मु जो तीनटा सेक्टर रे डिवाइड करथिली, गोटे होची प्राइमरी सेक्टर, गोटे होची सेकेंडरी सेक्टर, गोटे होची टर्शियरी सेक्टर. यदि आपण प्राइमरी सेक्टर रे देखिबे तबे almost around 40 to 45% people are getting employment in this. Here 40 to 45% labor force are dependent in the primary sector. So jodi 40 to 45 people are dependent, that means obviously that sector is seriously affected by this disguised unemployment. Okay, तेणु सबुठु अधिक जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए हम कंट्री रे, that is the disguised unemployment. Let's move to the HDI, Human Development Index. I mean, let me tell you, मु आपन को कहि रखे मु 2006 रु 2022 पर्यंत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि मु ताको कवर करूची. So let's begin. Among the following human development index is measured by, तेणु जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किए पब्लिश करता है दैट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तेणु को आपण कहि परिबे को इंडिकेटर्स गुडा को आमे एसडीआई कैलकुलेशन यूज करू. लेट मी टेल यू ये ह्यूमन डेवलपमेंट कोन. ह्यूमन डेवलपमेंट होची जेतले आपण देखिबे आगुरु खाली आमे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा कहउतले. ह्यूमन डेवलपमेंट होची गोटे ह्यूमन बीइंग रो ओवरऑल डेवलपमेंट विषय में कहि थो. तेणु जेतले आमे ह्यूमन बीइंग रो ओवरऑल डेवलपमेंट विषय कहि थो को फैक्टर को कंसीडर को नहीं थो. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हेल्थ, फॉर एग्जांपल ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, a good standard of living. So health, education and the good standard of living. So when this HDI is calculated, you can see there are three indicators. तीनटा indicators एतरे अछि या तीनटा dimension आमे कहि परिबा कोन. गोटे dimension होछि long and healthy life. Long and healthy life in the sense या भितर आउट कंपोनेंट कोन आसुछि ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन द सेंस जो हमरो इन्फेंट मोर्टालिटी अछि, गोटे पिला जो जन्म होची तार ड्यूरेशन कौन केते वर्ष पर्यंत से बंचुची या जो आमे देखुचे केते दिन भितरे तार डेथ होची. सो दैट काइंड ऑफ मेजरमेंट वी कैन सी इन दिस लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. ओके, सेकंड होची कौन नॉलेज. नॉलेज इन द सेंस की जो स्कूल ड्रॉप आउट अच्छी या स्कूल एनरोलमेंट रेशियो अच्छी. एनरोलमेंट रेशियो कौन केते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ते एनरोल इन स्कूल. ड्रॉप आउट कौन केते जण एनरोल करथिले एवं केते जण विथड्रॉ करिनेले ये स्कूल को आसु नांती. दैट इज द ड्रॉप आउट रेट. सो दैट आल्सो इज कैलकुलेटेड अंडर दिस नॉलेज एस्पेक्ट. आउट कौन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अच्छा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहले कौन इटा डिपेंड करछि योर अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी कौन आपन को रोजगार केते एंड हाउ मच यू कैन अफोर्ड इन द इकोनॉमी. सेथि पई गोटे इंडिकेटर दे कंसीडर जीएनआई पर कैपिटा. GNI per capita in the sense gross national income per capita.
So per capita income जोटा मैं कहूचे, you can say that, and a decent standard of living by you need a decent amount of income. तेणु तीनटा indicators रही जोटा को हमें HDI को measure करूँ. This image I have taken from this UNDP website. Okay, तेणु यदि आपण देखिबे तेबे कोन या भितर को ऑप्शन टा करेक्ट. यू कैन सी एजुकेशन, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. न्यूट्रिशन विषय आम ये कही नौ, आम क्या विषय कहूँ, हेल्थ विषय कहूँ. हेल्थ इज एब्सेंट. एठी भी देखिए न्यूट्रिशन अच्छी, देन यू कैन एलिमिनेट. तीनटा जिनस दीटा ऑप्शन एठी अच्छी, एजुकेशन, हेल्थ कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. एठी कोन अच्छी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जदि एठी अच्छी, somehow it's a kind of a confusion between this and this, but the more appropriate कथा कहबा जेहेतु टी हेल्थ कंडीशंस अछि, तबे हेल्थ कंडीशन को हमें slightly more appropriate मानी कि we can go for this B. Okay, we can go for this B, but overall आपण देखिबे B और D भितरे confusion रहिबो निहाती भाबरे, कारण similar kind of options commission देइछि. Let's move to the next. Okay, according to the recent estimates of the poverty line in India, daily calorie intake of a person in rural areas is, see, calorie intake in the sense, आपण देखिथिबे बहुत गुडे कमिशन या कमिटी बना जाइछि to estimate the poverty. Now, why these commissions are formed to estimate the poverty? काहेंगी एते कमिशन कमिटी बना जाए to estimate the poverty? काहेंगी बना जाए ना, first you have जदि गुटे प्रॉब्लम अछि ताको first हमको आइडेंटिफाई करबा को पड़िबो. If there is a problem, then first you have to identify that problem and then you can bring the solution. तेणु प्रथमे जानिबा को पड़िबो, first you have to know who is a poor. Then who is a poor, then you have to identify who are those poor individuals, poor families. तापर जाएगी you can come with some policy solutions or policy prescription. तेणु who is that poor, सेथिपाई different committees and commissions and formed. They provide a kind of a parameter और जहाँ को हमें measurement भी कही परिबा. So on that basis or on that basis of this parameter, government decides who are those poor or poverty related households and families. So that is the reason one commission was formed, Alag committee. Alag committee gave recommendations with respect to this calorie basis. So what this commission suggested or this committee suggested that rural and urban रे दीटा अलगा अलगा क्वांटिटी रो कैलोरी दरकार. तेणु रूरल रे से रेकमेंड कोन कले ना प्रति दिन 2400 कैलोरी गोटे इंडिविजुअल को दरकार इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक फॉर इट्स सर्वाइवल. एंड अर्बन रे ही सजेस्टेड और दिस कमिटी सजेस्टेड 2100 कैलोरी और 2100 कैलोरी. कहीं रूरल आई मीन अधिका दरकार कैलोरी 2400, कहीं ना रूरल इंडिया रे दे डू मोर फिजिकल वर्क एंड अर्बन रे लेस फिजिकल वर्क, सो वी नीड कैलोरी 2100. तेणु मिनिमम कैलोरी सेट जदि गोटे इंडिविजुअल ताकू कंज्यूम करि पारुची, देन दैट पर्सन इज नॉट बिलो द पॉवर्टी लाइन. दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय दिस कमिशन. तेणु एठी क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि, रूरल एरिया विषय रे. Obviously 2400 calorie is the right answer. Okay, this organization which has developed HDI, I have already told you, UNDP. Okay, name the economist who related poverty with the concept of entitlement. यदि आपण एठी चारटा ऑप्शन अछि, चारटा ऑप्शन यदि देखिबे एंटाइटलमेंट विषय रे की कहिछि. एंटाइटलमेंट होछि कोन, जेमति आपण देखिबे जेमती नरेगा, NRGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, आगुरु थिला NRGS. सेमती आपण देखिए फूड सिक्योरिटी स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, and now it has become National Food Security Act. So what are these act? These are right based approach schemes. That means these are the people's entitlement. Entitlement माने होची कोन ना, as a citizen of India, the government has some responsibility towards its citizen or the people, as it is a welfare government. तो जो entitlement concept होची कोन ना, प्रत्येक व्यक्तिर किछि अधिकार अछि काहा उपरे, गवर्नमेंट उपरे,
because since that person cannot afford something or this minimum requirement se nije afford kari paru nahi, so it's the duty of the government to provide those basic necessities or basic amenities. So entitlement concept hoji basically those who are poor individuals, they should be given some kind of help from the government, and that is their entitlement. ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା. ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ କନସେପ୍ଟ को किए डेवलप करथिला? अमर्त्य सिंह. Okay, fine. Which of the following is not a cause of inequality in India? Inequality in the ownership of asset, laws of inheritance, corruption. I mean, this question is not a cause. Okay, inequality कारण नुहे. Inequality in the ownership of assets, laws of inheritance, corruption and smuggling, growth of service sector in India. Growth of service sector in India re bhi we can say I mean inequality can be possible. Again corruption the inequality achi kahingi na concentration of wealth हुए, and inequality in the ownership of asset, inequality will definitely be there. So one option is which is left, जोटा कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस होची जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर्टी कौन हुए ट्रांसफर हुए. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन जो होची ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ कैपिटल आमे जानी छे कैपिटल कौन, इट्स एन एसेट. इट्स could be the natural or man-made. Capital is something, one factor of production. आपण एमती जानी थिबे जे factors of production जो अच्छे हमर अछि से factors of production केतेटा अछि, चारटा अछि. गोटे होछि land, labor, capital and entrepreneur. तो जो capital होछि कोन, one factor of production which contributes or is a part of this production process. Number one. Number two, आपण the capital को define करिवे तबे capital can be defined as man-made or natural. So when we say human capital माने होची कोन, जो आपण को कंट्री जो ह्यूमन बीइंग अछंती, पॉपुलेशन अछि, you have to make them a capital, और capital is a positive connotation और जाको हमें asset बोली कहितो. तने ह्यूमन बीइंग को आपण गोटे कंट्री रो asset बोली केमिति बनै परिबे. आपण छोटो एग्जांपल दोउची, population is always considered as a liability. Liability या बोली हम ताको कंसीडर करितो. It's a burden in the economy. But China has changed this notion and India is also trying to do that. What China has changed? China changed its notion that now population is not a liability, rather it is an asset for a country. How population can be an asset? If you invest in the human being and make them skilled, make them educated, make them a healthy and well-being of the people, they can contribute in the economic growth, they can contribute in the economic activities of the country. Jete saman educated hebe, jete healthy rahibe, and jete you can say skilled seman ko apana dei paribe, they can contribute in the economy. Teno setpe ame kohu human capital formation hoji, the government has to invest in the education, health, skill set of the people. Teno in that sense we can say human capital formation is possible. Teno if you see this options, तबे ये एथरे गोटे जिनसे आसुची कोन ना development of abilities and skills of the people. Development of abilities and skills of the people आमे को कहि परिबा human capital formation. Okay, चल usual principal status employment measure. Employment को जो measure करा जाए तार दीटा component अछि measure करिवा पे. गोटे होची यूजुअल स्टेटस, आ गोटे होची करंट वीकली स्टेटस. ए यूजुअल स्टेटस कोन, जेतबेले गोटे रेफरेंस देखंतु गोटे इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट की नाही आमे केमिति जानिबा. एम्प्लॉयमेंट रो डेफिनेशन होची या अनएम्प्लॉयमेंट रो डेफिनेशन म आपन कहूची, इट्स नॉट दैट इफ यू डू नॉट हैव ए जॉब दैट मीन्स यू आर अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयमेंट माने होची कोन, सपोज यू आर विलिंग टू वर्क at the prevailing wage rate but you are not getting that job. You are willing to work, आपनकर इच्छा अछि काम करिवा पई at the prevailing wage rate but you are not getting that. That is known as the unemployment. Now how that is measured? If people are there, suppose go to individual 6 months he worked and another 6 months he did not have work,
1 week he worked, another 1 week he did not have any work. So kahaku ame unemployment kahiba, kahaku employment kahiba. जदि आम यूजुअल स्टाटस को देखुचे, यूजुअल स्टाटस को रेफरेंस पीरियड पे आम कौन नहीं थो गोटे 365 डेज रे आम देखि कि लास्ट 365 डेज रे how many days that person was engaged in the work, how many days that person engaged in the work. से इंडिविजुअल को 365 दिन भितर केते दिन ताको काम मिलिथिला. सेमती वीकली स्टेटस यदि कहबे आमे लास्ट 7 डेज को एज ए रेफरेंस पीरियड बोली देखितो, राइट. सो इफ यू कम टू द क्वेश्चन that what is the answer, then if you see that number of persons who did not find even an hour of work during the survey week, number of persons who remained unemployment for a major part of the year. So 365 of the year जेतोले से कहूची 365 days मध्यरे से केते दिन काम करिछि एवं केते दिन काम करि नाही, सेटाकू as a reference आमे नो if we measure employment or unemployment under this usual principal status. And if you do that with reference to a week, that would be your current weekly status. Okay, Tendulkar committee appointed on. Tendulkar committee ଆପଣ ଦେଖିବେ 2011, 12, 13 ସମୟରେ Tendulkar committee was formed by the Congress, the UPA 2 or Congress second term, and it was formed to measure this poverty estimation. And this Tendulkar committee recommend कौन करिथिला या कौन suggest करिथिला, how he has defined the poverty line. से poverty line define करथिले जदि गोटे इंडिविजुअल से रूरल एरिया रे, गोटे इंडिविजुअल रूरल एरिया रे जदि से 26 टंका कमाउची, if that person is earning 26 rupees per day, that means that person is above the poverty line. And in urban area that amount is 32 rupees, 26 for rural and 32 rupees for the urban, then that is the poverty line. Although it was severely criticized, and finally after that government came with this another committee, C. Rangarajan committee. And Tendulkar committee जो methodology thila, that was based on this consumption expenditure. Consumption expenditure in the sense को products को consume करंती गोटे individual, so that consumption basket first they decided, and से consumption basket को afford करिवा पाई this much of income are required. से बेसिस रे तेंदुलकर कमिटी रेकमेंड करथिला. आगु का मैं देखिबा स्लाइड डिटेल रे. नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखंतु, पॉवर्टी जो कांसेप्ट होची, पॉवर्टी माने होची कोन, पॉवर्टी माने होची आगुरु आमे देखुतिले पॉवर्टी को एमती डिफाइन करथिले कि लैक ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल, और लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, एंड बेसिक एमिनिटीज रे आमे देखुतिलु इनकम को. But gradually this concept has shifted or evolved. That concept has evolved in the sense from this concept of adequate amount of income, or a person cannot earn required amount of income. Say definition we shifted to the multidimensional poverty. What is this multidimensional poverty? When we say poverty, then it includes this education, it includes the health, it includes this standard of living, it includes this, let's say, sanitation, drinking water facilities. So every aspect we covered under this multidimensional. तो खाली जे जने required amount to कम income करूची ताको हमें poverty कहबा सेमते नुहे. If that person cannot afford the other amounts as well, other basic requirements, कहीं ना sanitation, health, education, these are the basic requirement. तेणु से मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एबे चली आमर से देखुवे आपण कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आसे, राइट. अच्छा, दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आपण देखिए गोटे हूँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, आ गोटे हूँ रिलेटिव पॉवर्टी. ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन ना, सिंपली एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पर्सन्स और हाउ मेनी इंडिविजुअल्स are below the poverty line. If you draw the poverty line, या the first you have decided the poverty line, आपण poverty line decide करिसंदी केते जण लोक से poverty line तळे रहउचंदी, that is simply the absolute poverty line. Correct? What is this relative? When we say relative poverty, that is the comparison between the people, different sections of the people, different groups of the people. तो the comparison हुए
that relative poverty is nothing but the inequality. That relative poverty is nothing but the inequality. So inequality जो concept जो आसे, that is simply known as the relative poverty. You just compare. कि जेतବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ कि what is this inequality, the inequality is rising between the rich and poor section. So जो inequality अछि, that inequality is nothing but the relative poverty. And what is this absolute poverty? Simply absolute poverty का मतलब ये है how many people are just below the poverty line. ठीक अछि, दीटा भितर डिफरेंस हमें देखिले. तेणु हमें देखिबा absolute poverty माने कोन ना, poverty in terms of absolute number of people, poverty in terms of basic minimum calorie requirements, poverty in terms of the prevailing price level, poverty in terms of the absolute level of unemployment. So appropriate answer is this: how many people are below this poverty line, that is the absolute number of people, and that is known as the poverty. Next, again this HDI is interested with reference to, again that has been repeated. सेतपई मु बारंबार आपन को कहिछि, I have told you multiple times, just go through the previous year question paper before you start your preparation. Okay, life expectancy at birth, real GDP and per capita, infant mortality and morbidity are not there. Nahi. Okay, exactly e dita jinsa achi. So answer is 1 and 2. Next is, which of the following is not related to empowerment of women? This question is again related to this human development. If you see, again this UNDP comes with, UNDP out index produce करे या publish करे, that is the gender development index. Gender development index माने gender in the sense कि एठी women को विषय रे कहा जाए, women in comparison to men केते politically aware, economically empower, socially empower, से जिनसे उड़ा को हमें go through रे measure करूँ gender development index. तो gender development index कोटे अछि. Which of the following is not related to it? Not हमें देखिए को पाएगा. Gender development index is about the women empowerment, empowerment of women. Gender empowerment measure again. Okay, gender budgeting माने specific budget amount we spend for the women. Okay, female section. Gender discrimination, again gender discrimination is not part of this empowerment of women, or this does not lead to empowerment of women. Okay, chalo, for each country global hunger index, recently global hunger index publish करा जाइथिला, and just try to find it out कि इंडिया रो रैंकिंग केते अछि. इंडिया ऊपर को कंट्रीज माने अछंती बेसिकली इन द साउथ एशियन रीजन. ओके, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रति वर्ष पब्लिश करा जाए, सेतरे रैंकिंग आसे को कंट्री केते रैंक अछि. इंडिया हैज आल्सो गिवन ए रैंक. नाउ कांसेप्ट होची कोन ना, को इंडिकेटर्स गुडा को हमें मेजर करू व्हेन वी discuss this hunger, global hunger index value. Okay, I will come to the answer later. Let me tell you what are those points. First is undernourishment. Undernourishment माने कौन? Now the share of the population whose calorie intake is insufficient. जो sufficient calorie intake रा requirement अच्छी for an individual, for a standard health or a better health, that much required amount of calorie they are not getting. सेमान को मिलू नहीं as per the standard. Okay, so that inadequate calorie intake जेहेतु अच्छी, we call it the undernourishment. Second कौन? Child mortality. Child mortality कौन? ना the share of the children who die before their 5th birthday. Child mortality. Child stunting यदि देखिबा हमें, the share of the children under the age of 5 who have low height for their age. That means age बढ़िबा सहित height रो जति की बढ़िबा requirement अछि या बढ़िबा दरकार सेति की बढ़ू नाही. Next is what? Child wasting. ये child wasting माने कौन? The share of children under the age of 5 who have low weight for their height. Height बढ़िबा सहित जो weight भी बढ़िबा दरकार, that is not happening in case of this. Then it is known as child wasting. तेणु यदि देखिबे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रे कौन कौन अच्छी ऑप्शंस या को इंडिकेटर अच्छी को कंपोनेंट अच्छी, then all these 4 are part of this global hunger index. 1, 2, 3, 4 are
correct. Okay, so these are meaning of these concepts. It can be repeated. A question आपको पूर्ण थरे पचारा जाई पारे, so be careful. चलो next, which of the following committee recommended a poverty line based on nutritional requirements exclusively? Nutritional requirements जो calorie intake विषय में कहूले, that is the nutritional requirement. तेणु जो 2100 calorie for the urban people, 2400 calorie for the rural people, so that calorie intake or nutritional requirement. So which committee has given this? आपको आगुरी भी कहती the alag committee. However, let me discuss with you how these people or these committees, what were their recommendations. If you see the Lakadwala committee 1993, it simply what it did, या पूर्वर कौन आसीथिला अलग कमिटी रिपोर्ट आसीथिला अलग कमिटी रिपोर्ट रे से माने कौन लिखिथिले 2100 कैलोरी एंड 2400 कैलोरी विषय रे लिखिथिले तो सही रिक्वायरमेंट या सही जो बेसिकली दैट काइंड ऑफ रिकमेंडेशन वाज सपोर्टेड बाय लाकड़वाला ताको सपोर्ट करथिले सो इट डिड नॉट रीडिफाइन द पॉवर्टी लाइन एंड रिटेन द separate rural and urban poverty lines recommended by the alag committee. So alag committee jaha recommend करथिला लाकड़वाला ताको support करथिला and alag committee कौन recommend करथिला 2100 calorie for the urban, 2400 calorie for the rural. Now coming to रंगराजन committee केबे हेतिला तेंदुलकर committee पूर्वरु हेतिला तो तेंदुलकर committee यदि आपण देखिबे ये तेंदुलकर committee कौन recommend करथिला ना 26 for the urban and 26 for the rural, 32 for the urban. If you are earning this much amount per day, then you are above the poverty line. So this is defined by the Tendulkar, and basically se kaun karthile instead of monthly household consumption expenditure per day, consumption expenditure where prati dino kette kharcha hoba darkar as per the consumption or your basic requirement. खाद्य प्लस आपण हेल्थ कथा कहि परिबे एजुकेशन कथा कहि परिबे ए सब बेसिक खर्च पई गोटे लोकर प्रतिदिन रो आय केते होवा दरकार सेटा की डिसाइड कला तेंदुलकर कमिटी एंड रंगराजन कमिटी केम विथ अनदर काइंड ऑफ रिकमेंडेशन सी कोन कले इंस्टेड ऑफ दिस 32-26 सी कोन कले 47 फॉर अर्बन एंड 32 फॉर रूरल जो 32 एटा थिला कोथि पई अर्बन पई सेटा को से कले रूरल रे रखले एवं 47 को से नहीं आसले कोठी की अर्बन पई सो दिस वाज द चेंज एंड अगेन से जो आमे देखथुलु कोन ना कंजप्शन एक्सपेंडिचर अछि गोट हो फूड आउट हो नॉन फूड कैलोरी प्रोटीन एंड फैट इनटेक एंड नॉन फूड आइटम्स लाइक क्लोथिंग एजुकेशन हेल्थ हाउसिंग ट्रांसपोर्ट एगुडा को से माने कंसीडर करिके एंड दे डिसाइडेड this is the poverty line. Okay, so these are 4 significant or important committees and their broad recommendation. These committees are generally asked in the question pacharanti semane prati varsha tenu you can get this. I will share this PDF in the group so you can get it. Chala again this human development index super question पूर्ण थरे repeat हेजी या भितर कोटा से कहूची not used to calculate human development index. Education is calculated, per capita income is calculated, and life expectancy is calculated. Social inequality जो अच्छी that is not calculated in the human development index. Okay. चलो. Okay. The first sustainable development goal aims to eradicate extreme poverty. अपनों दी जानी थिबे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अच्छी तार जो फर्स्ट टारगेट इज अबाउट द रिड्यूस द पॉवर्टी और नो पॉवर्टी तेणु हाउ डज द यूएन करेंटली मेजर एक्सट्रीम पॉवर्टी यूनाइटेड नेशन केमिति पॉवर्टी को डिफाइन करूची इंडिया इज डिफाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज लाइक कंजप्शन बेस्ड एक्सपेंडिचर ओके बट UN केमिति डिसाइड करूची UN केमिति डिसाइड करूची ना you can see the 5 options
people who are unemployed and unable to access welfare benefits of the state, people who live on less than $5 a day, people who claim to be living in poverty, people who live on less than, that is, this is 1.5 a day dollar. That 1.25 a day in terms of dollar, this is the right answer. The extreme poverty is currently measured as the people living on less than 1.25 dollar a day. এটা को किए calculate करूची, United Nations এটা को calculate करूची. This is the right measure and this is the answer. Okay, you can see this, the sustainable development goals. First target is what? No poverty, or first goal is no poverty. Okay, consider the following statements. This question asked in this year, I mean in 2022. Poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure, not on the income level. That is correct. Consumption expenditure basis रे ही हमें calculate करूची poverty line को, income को हमें consider करू नाही. तेणु consumption expenditure जदि हमें कहू, तब consumption expenditure includes both food and non-food items. Food items जेमती मु कहली आपन को, food सहित non-food items होची कोन, जेमती clothing, kapda, housing, ghara, and then the health, education. These are the non-food items. So food and non-food items is or they are what considered while calculating the poverty line in our country. तेणु इनकम को आमे कंसीडर करूने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कंसीडर करूचे. सेकेंड होची कोन, it is difficult to assess incomes of self-employed people, daily wage laborers, etc., and there may be large fluctuations in income due to seasonal factors, right? अच्छा, ये statement केते correct and केते wrong, let's examine. Seasonal factor मुझे जमते अपन को example दोतली, when there is a peak season in the agricultural activities, जहाँ में harvesting season भी कहूचे. Just a second. Harvesting समय भी कहूचे, पंजाब एंड हरियाणा को बहुत गुड़े लेबर फोर्स जाइथंदी कोटू, दिस झारखंड एंड बिहार एंड ओडिशा बेल्ट. तो से समय रे कोन देखा जाए ना, काम तो तांको मिले, बट व्हेन there was no agricultural activities, agricultural काम जेतले न थाए, से समय रे कोन हुए, obviously they do not get the job. Although Narega is there, but they do not find the job. Ultimately they rely on the Narega. Second example मैं आपन को देवी, जेमती कि suppose right now in Delhi there is a huge pollution, air pollution. High amount of air quality index is very poor, or air pollution देखा जाओ जी. What government asked that if or stop those unnecessary construction activities. Construction activities को अपन को बंद करिया को पड़ियो. जितने construction activities को बंद करिया पड़ियो, those people who are rely on this construction activities or construction sector, again they lose the job. So seasonal factor is somehow responsible in the variation of income of those kind of daily wage labor as well as the self-employed people. Suppose जेमती वर्तमान फेस्टिवल सीजन चली, दशहरा, दिवाली, तो फेस्टिवल सीजन में देखिबा बहुत गुडे लोकंकर इनकम बहुत बढ़िया रोज. Apart or when this festival is over, their income will come down. So this self-employed as well as this daily wage, definitely their income varies with the seasonal variation. Okay, so again this statement is correct. Okay, so if you find the answer, then you can simply say that both the statements are correct, but none is an explanation of the other. Okay, so you can say that both the statements are correct. C would be the answer, but none is an explanation of the other.
So no one explains the others, like you can say जो हमरो कोई तो ना access and reasoning. So केही काहाको explain करू नाहंती, right? So answer is C. So that's it from my side, and tomorrow also we'll come with another new topic. So like this, we'll cover economy, then polity, then geography, all those previous questions we will definitely cover. So do join us and watch it live, and please share and subscribe our channel. So till then, thank you, all the best.